हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड 2 पॉइंट क्रॉस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो सो दैट इट विल बी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज two genes A and B are located at a distance of 10 centimorgan. Individuals of the genotype AABB are submitted. Means this is a F1 cross. Okay, the two genes are linked in trans. This is important information. What percentage of the progeny is expected to have the genotype AABB? मतलब टू जीन्स है, राइट। 2 पॉइंट क्रॉस मतलब टू जीन्स। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू जीन्स आर लिंक्ड इन ट्रांस, मतलब अपोजिट होगा। ओके, यहाँ पे ए विथ स्मॉल बी एंड ए विथ कैपिटल बी, राइट। अभी यहाँ पे 10 सेंटीमॉर्गन मतलब 10% रिकॉम्बिनेंट्स होंगे एंड 90% पैरेंटल होगा। ओके, पैरेंटल में क्या होगा? ए बी, राइट, ट्रांस कॉम्बिनेशन। ओके, दिस विल बी एंड 10% में होगा रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब दिस इज पैरेंटल। ओके, एंड रिकॉम्बिनेंट्स विल बी ए with capital B and a small b. These are recombinants. तो हमें चाहिए ये जेनोटाइप। ओके, सो ये 5% होगा। 10% में 5% कैपिटल ए बी एंड 5% स्मॉल ए बी। तो यहाँ से 5% हमें चाहिए, मदर से 5% एंड फादर से 5%, राइट। तो फ्रॉम मदर and from father we have to see, right? So 5/100, 5% means again 5/100 into 100. Okay, so this will get cancelled, right? And 5 ones are 5 twos are 10, right? And 5 ones are 5 fours are 20, and 1/4 is 0.25, right? So option 1 is the got it. Next question. The maximum frequency of recombination that can occur between two loci is. Maximum recombination frequency क्या होती है? Okay, we have discussed that is 50%. 50% is the maximum recombination frequency. Next question. In a linkage map, two genes A and B are 70 centimorgan apart. If individuals heterozygous for both the genes are test cross, okay, test cross किया है, number of progeny with parental phenotype will be. First option is equal to the number of progeny with recombinant. okay, मतलब parental का नंबर recombinant के नंबर से इक्वल होगा क्या, या फिर मोर होगा, इक्वल, मोर, लेस, or could be more or less than the number of progeny with the recombinant phenotype, depending on whether the genes are linked in cis or trans respectively. So basically यहाँ पे hint है, see, question is asking 70%, right, 70 centimorgan, मतलब 70% recombination. तो 70% रिकॉम्बिनेशन हमने देखा 50% मैक्सिमम है, एंड 50% से ज़्यादा हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, राइट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स मंडेलियन सेग्रीगेशन। ओके, क्या जीन्स लिंक्ड होंगे? नहीं, तो जीन्स विल बी अनलिंक्ड। 50% के ऊपर
जीन्स आर नॉट अनलिंक्ड, 50% के ऊपर जीन्स आर नॉट लिंक्ड, राइट। सो अनलिंक्ड जीन्स है, तो फोर्थ ऑप्शन तो कंफर्म रॉन्ग होगा। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है एंड टेस्ट क्रॉस है, राइट, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में तो इक्वल नंबर्स हमें दिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। Cross was made between two pure wild type males and brown-eyed curled-wing females of Drosophila melanogaster. The F1 females were test cross. The F2 progeny obtained was as follows. अभी पेरेंटल्स का नंबर है ये, राइट, जो हाईएस्ट नंबर्स होता है पेरेंटल एंड जो कम होता है वो रिकॉम्बिनेंट्स, राइट। तो टोटल इज 400। अभी दिस इज अ लिंकेज एंड हाउ टू फाइंड द जेनेटिक डिस्टेंस, दैट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ही हमें फाइंड करना है, ओके, राइट। परसेंट इज इक्वल टू सेंटीमॉर्गन इन दिस केस, यू नो दिस। तो व्हाट इज द थिंग, अभी हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट्स आई विल राइट अ फॉर्मूला अगेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे है 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 400 multiply by 100, okay, then it will be 50 upon 400 multiply by 100. So 2 zeros will be cutting, right, 4 ones are 4, 4 twos are 8, right, then 4 fives are 20, 12.5, okay. So answer is 12.5. Got it? So number 1 ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। Again same type of question, a test cross was made with phenotypically wild type Drosophila flies having genes for sepia, eye and curled wing in heterozygous condition. So basically this is a test cross. Test cross में हमें equal segregation नहीं मिलता when there is a linkage, right? हमने देखा है previous videos में, right? So इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मंडेलियन टाइप जेनेटिक्स उसमें हमें इक्वल 1:1:1 मिलता है दिस, राइट। बट व्हेन देयर इज अ लिंकेज वी डोंट गेट इक्वल, वी गेट पैरेंटल्स मोर रिकॉम्बिनेंट्स लेस, ओके। तो यहाँ पे रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं वाइल्ड टाइप 400 एंड सेपिया मीन दिस इज द पैरेंटल। First we have to identify the parentals and then recombinants. P stands for parental, R stands for recombinant. अभी ज़्यादा है 400 इंडिविजुअल 350 एंड recombinants कम है, so here there is a linkage. See the option, the result indicates independent assortment. Independent assortment नहीं है, as the wild and double mutant types are in almost equal. This is wrong, independent assortment तो नहीं है because parentals are more and recombinants are less. Unequal segregation as it is showing departure from 1:1, no, unequal segregation तो हम नहीं बोलेंगे. Complete linkage as two genes are very closely spaced and the linkage, the two genes are separated by 25 centimorgan distance. अभी हम एक कैलकुलेट करेंगे, right, for these two things. First of all, recombinants 150 plus 100 divided by total is 1000
मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 250 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 zeros कट, 25. Yes, the fourth option is linkage. The two genes are separated by 25 centimorgan. So these were the questions of 2-point cross. Okay, next video में हम 3-point cross के question देखेंगे, right? So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, subscribe the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.